different crystal with a single chemical composition, they will exist. So chemical composition saman thibo. Suppose कि दीरा chemical composition धरे AB अच्छी, but they have different shape. कोटा empty shape को कोटा empty shape. So हम आपको कहते हैं polymorphism. So mineral having a single chemical composition can exist with two or more different crystal structure. That is called polymorphism. Can a crystal consist करता है जो mineral को नहीं, they are arranged in different way in different temperature. Suppose धरे कि AB नहीं चलती सी गोटे particular temperature एक बार arrange है आउट टेम्परेचर जब तुम्हें बढ़ेबो बा कमेबो से अनुसार आर अरेंजमेंट बा एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हुए डिफरेंट बॉन्ड विल बी स्टेबल एट डिफरेंट टेम्परेचर यदि टेम्परेचर तुम इंक्रीज करला बा से सुटेबल टेम्परेचर न देला से बॉन्ड ब्रेक करके दे विल अरेंज इन अ न्यू वे सो बिकॉज़ ऑफ दैट तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म प्रोड्यूस से बॉन्ड ब्रेक करके न्यू बॉन्ड क्रिएट करेबा बा न्यू स्ट्रक्चर अचीव करेबा को हम कहते पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन. So polymorphism is called the single chemical composition to a similar chemical composition with different crystal structure. So what are the different types of polymorphic transformation? So there are three types of polymorphic transformation. What are called the reconstructive, what is displacive, what is order disorder. What is reconstructive, what is displacive, what is order disorder transformation. So reconstructive meaning what to try to have to reconstruct everything, so the structure will completely break and it will form in a new way. So completely break our structure and new way का formation. So this process involved or required higher energy and also emit higher energy. And जेहेतु पूरा bond break करके नया formation होची, it is also a very slow process. The both slow process है. So reconstructive रे bond completely structure टा break हवा and it will again form in a new way by reassembly हवा new way रे. So ସେଥିପାଇଁ ଏଟାରେ higher energy दरकार and higher energy भी emit करेगा. So if a transformation इतने slow था जे, so in between two transformations, suppose A to B हवा करता, there is this intermediate mineral also exists, that is called C. So A to B होगा तो कितने टाइम लगेगा जब मझे C गोटे मिनरल एग्जिस्ट करे, so that is called मेटास्टेबल मिनरल. तो कौन कहते हैं मेटास्टेबल मिनरल. एग्जांपल होची डायमंड. कहना कार्बन रु कौन होगा हम जानना है, बोला ना तार मेटास्टेबल होची डायमंड. Diamond is existing between the polymorphs of carbon and something. Carbon और something भितर diamond टा exist होची. तो कहते हैं reconstructive transformation. Displacive कौन? Displacive simple होची कि there is a smaller adjustment to the crystal structure. कि तुम्हें कोटे जिनिसों को एमती arrange कर सकते. एमती arrange कर सकते. तो तुम्हें एमती arrange कर दो. एमती arrange कर दो. So rearrangement खाली करो. तुम्हें देखो एमती arrange कर दो. Rearrange करो खाली. कि कौन सी उटा आयन को displace करो. So the rearrangement of the structure, कि कौन सी bond completely break करनी, खाली there is a little adjustment between the crystal structure. तब हम कहते हैं displacive. तब कहते हैं displacive. तो ये जेतु smaller adjustment में ना energy अधिक दरकार, ना energy अधिक release हुए किसी में. तो example होची हमारा high quartz और low quartz, कि beta quartz हम कहते हैं, अब alpha quartz. So alpha quartz रूट रहेगा, will convert to beta quartz. At 573 degree or 580 degree, जहाँ भी कर 573 degree बन रहा था. Alpha और beta quartz कौन? Alpha quartz को 573 रे will convert to beta quartz. तुम्हें beta quartz को 573 थोड़ा को रेशियो से पुणे alpha quartz. So these are reversible. So पेपर कौन था? Reversible था. Can easily से मैंने out of form को convert एक करे, then again they can reverse to the original form. Because कौन होती है कि smaller adjustment होती है. यदि smaller adjustment होती है ताले easily से
पर पुणी निज ओरिजिनल फॉर्म को इजीली फेरी आइसबे एटा क्विकली एटा हुए एटा स्लो हुए एटा क्विकली हम एंड रिवर्सिबल so order or disorder transformation it is simply based on temperature कहना जो हमें कहले कि जो बेसी टेम्परेचर हो आयन माने एटम माने कोन करे ताको तो स्पेसिंग बढ़ो तो जोड़ा कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़े मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ले आयन एटम मानकर रैंडमनेस बढ़े जते हाई टेम्परेचर रहबे सेते डिसऑर्डर फॉर्म रे रहबे जते लो टेम्परेचर रहबे सेते ऑर्डर्ड फॉर्म रे रहबे तो सेति पे कोनोसी मिनरल जदी तोरा हाई टेम्परेचर कंडीशन ने डिसऑर्डर कंडीशन रे रहउची ताले तार जहा स्ट्रक्चर अछि से गोटा अलग स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट बा अलग स्ट्रक्चर को कन्वर्ट हे है ना so temperature that increase way the degree of order or randomness crystal decreases so that the high temperature forms of minerals are more disordered. So the high temperature form रा कौन अधिक disorder है ना तो एक एग्जांपल होची तुम्हारा ऑर्थोक्लेस फेल्सफायर कि हाई टेम्परेचर रे इट विल फॉर्म एज सानिडाइन एटा कोन फॉर्म होबो सानिडाइन एंड लो टेम्परेचर रे एटा कन्वर्ट हे जो ऑर्थोक्लेस आउरी भी लो टेम्परेचर आसले it will come to microclave. So orthoclave जो इंटरमीडिएट रहला सेटो टेम्परेचर बढ़ले एटा आइ जो सानिडाइन तार टेम्परेचर कमिले एटा हला माइक्रोक्लेव so these are different पूरा polymorphs of orthoclaves जोटा कि डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर and it is an example of order disorder और तीन टाइप रो polymorphic ट्रांसफॉर्मेशन ला गोटे होची रिकंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन गोटे होची displacive transformation गोटे होची order disorder transformation तो reconstructive displacive और order disorder तापर kinds of polymorphs so two types of polymorphism recognized है according to तुम्हारा whether the change is reversible or irreversible so what called the anisotropy where the change is reversible or the monotropy where the change is irreversible example man rakho quartz stratigraphy graphite diamond ଆଉ irreversible होची एमती पायरेट मार्कासाइट यदि क्वार्ट्ज ट्रीटमेंट हे पर ट्रीटमेंट क्वार्ट्ज हे पर ग्राफाइट डायमंड हे पर डायमंड ग्राफाइट हे पर सुटेबल टेंपरेचर प्रेशर अप्लाई करा but pyrite marcasite once pyrite to marcasite hele it will not reverse and these are different polymorphs mone rakhiba diamond or graphite so diamond will convert to graphite at 50000 atm pressure and 1500 degree temperature which is not possible in natural condition also now and also in laboratory condition is also not possible so this is your kyanite, sillimanite and andesite. These are polymorphs. They have a composition of Al2SiO5. So kyanite, sillimanite is high temperature, high pressure. Andesite low temperature, low pressure. Then these are different polymorphs of quartz. Low quartz, then tridymite, then crystallite, then the liquid form. And coesite and stishovite they are higher pressure polymorphs. Tridymite, crystallite are temperature polymorphs. These are pressure polymorphs. If pressure बढ़िबो ताले quartz टा convert होबो coesite stishovite. खाली यदि temperature बढ़िला low pressure रे ताले it will convert to tridymite crystallite. So it will convert to tridymite at 1470 degree temperature. Sorry, it will convert to tridymite at 873 degree temperature. At 873 degree, quartz will convert to tridymite. Tridymite will convert to crystallite at 1470. Then calcite aragonite, these are two polymorphs. Then another three to rutile, bruchite, anatase. Rutile, bruchite, anatase. These are three polymorphs.
by composition is your TiO2, titanium oxide. They all have similar composition, but the crystal structure are different.